So let's come to here ICAI. पारस अभी थोड़ा बड़ा इंट्रोड्यूस कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम क्वेश्चंस भी साथ साथ में करेंगे ना तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो जाएगी। मुझे क्या नहीं भाई, आपने भी घर पे बीवी बच्चे हैं। तो हम जाएंगे भाई यहाँ पे न्यूज इंटर, क्या बात है, दरवाजे ही दरवाजे लगे हुए भाई, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। विच मॉड्यूल दिस चैप्टर? मॉड्यूल 2 में है अपना ऑडिटिंग का चैप्टर। कम टू दी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी एक बार कर लेंगे सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते भाई। रशियल टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड was incorporated during the financial year 1920. Is it the same material what you have? Okay. So guys, incorporation दिया है तो you tell me ये क्वेश्चन किसके बारे में होगा, बाकी छोड़िए। अगर एग्जैक्टली पूरे ऑडिट के चैप्टर में इनकॉर्पोरेशन अगर अभी हुआ है तो आई थिंक फर्स्ट ऑडिटर is the most probable point what they might have included over here. First AGM of the company, नहीं, अब AGM held हो चुकी है, held on 30th September 2020. The company appointed Messrs. Rams and Associates Chartered Accountant firm for the period of 5 years as a subsequent auditor. This question कहाँ है? I think maybe they have given just the information. Okay, illustrations अपने क्वेश्चन शुरू होते हैं। अरे बाप रे, एक सेकंड, इलिस्ट्रेशन से जा रहे हैं। अच्छा, तो वट एवर एग्जाम्पल्स आर गिवन बाय देम दे आर जस्ट इंफॉर्मेटरी नोट्स ओनली, राइट? अरे ओके, यहां से हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। चलो शुरू करते हैं। मॉडर्न फर्नीचर्स लिमिटेड, डिस्पाइट नॉट मैंडेटेड बाय सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट। व्हाट इज 177? ऑडिट कमिटी। तो क्या मैंने कुछ भी ऐसा पढ़ा है जहां पे आपको ये हो कि अगर ऑडिट कमिटी इज देयर देन हाउ टू अपॉइंट द ऑडिटर, ऑडिट कमिटी इज नॉट देयर देन हाउ द रिकमेंडेशन। ओके, तो इतना आपको पता होना चाहिए। As in when you are reading these question, your knowledge should get reshuffled. So I would call this strategy as like a reading with the retrieval. Read करते जाओ, answer retrieve करते जाओ। Read with the company's meetings of the boards and its power source 2014 to constitute audit committee on their own on voluntary basis. Constitute such audit committee. So okay, even if it's not mandatory, but they have constituted. But law की language क्या है? If you have audit committee, then you have to take the audit committee's recommendation, or you have mandatory audit committee, then you have to take the audit committee's recommendation. Law की language क्या है? अगर तुम्हारे पास है तो उसका रिकमेंडेशन बोर्ड को लेना। 177 एप्लीकेबल है या नहीं है उसकी बात नहीं है, ठीक है? सो प्लीज, such committee recommended to the board the name of the individual auditor or of an audit firm who may replace the incumbent auditor on the expiry of the term of such incumbent, but board didn't consider the recommendation of the such committee, examine the legal validity. You tell me one thing, whether the board has the right to reject the recommendation of the committee? Yes. Answer is yes, it has. It has. But उसके लिए उसको क्या करना होगा? He has to record the reasons in the minutes books of the board meeting and into the board report also. ऐसा हमने कुछ पढ़ाया था? तो देखो हम इसको पढ़ते क्या है? In case where the audit committee is not required but constituted by company, then also such committee shall recommend. Okay, okay, वो ठीक है।
But in such case, board may or may not consider the recommendation of the said audit committee. Hence, act of the audit committee and board amiable is legally valid. But एक गलती लिख दी उन्होंने, वो गलती क्या थी बताओ? They should have said that if you are not considering this, you have to record reasons for that. वो बेटा इस आंसर में नहीं है, तो I'm little bit disappointed कि हमारी आंसर थोड़ी और बेहतर बन सकती थी. Let's go to, I would say, illustration number 2. कंसिडर करना ही तो एक्सेप्टेंस हुआ. आप कंसिडर नहीं कर रहे हो तो आप रिजेक्ट कर रहे हो उस रिकमेंडेशन को. तूने तेरा रिज्यूमे मुझे भेजा है, मैंने कंसिडर नहीं किया, तो अल्टीमेटली क्या मतलब हुआ? अरे ऑब्जेक्टिव तो एक ही हुआ ना भाई. मैंने तेरा रिज्यूमे लेके बिना चेक के डस्टबिन में फेंक दिया, क्या रिजेक्शन नहीं हुआ है? या तो कहेगा नहीं सर, मेरे को प्यार भरा एक लेटर लिखो कि डियर सर आई हैव रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन. अल्टीमेट तो भाई है कि तेरे को नहीं लेना था ना, खत्म से बात है. ओके. Unicorn Steel Private Limited is incorporated as on 2nd June 2022. Board of Directors of the company held board meeting as on 15th. So you tell me guys, how many days after the incorporation meeting was conducted? 9, yeah, 9 or 8. अरे 15th 6th को क्या हुआ भाई? देखो 2nd जून को आपने बुलाया, 15 को आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई है, एंड अपॉइंटेड जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स एज द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. खत्म बेटा, यही पे क्वेश्चन पता चल गई. कैन द फर्स्ट ऑडिटर बी अपॉइंटेड फॉर द 5 years? हिज टेन्योर इज जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ. तो आगे क्यों हम पढ़ेंगे? एज पर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 द बोर्ड शैल अपॉइंट विद इन 30 days. इवैल्यूएट द लीगल वैलिडिटी, वैलिड और इनवैलिड. बेटा एमसीक्यू में पूछा है, बेटा क्या होगा आंसर आपका? आंसर इज बी, इट्स इनवैलिड. मुझे उसका जस्टिफिकेशन नहीं देना है. गॉट इट. थर्ड क्वेश्चन. Managing Director of PQR Limited wanted to appoint Mr. Ganapati, a practicing chartered accountant, as first auditor of the company. He himself, without consulting the board, appointed Shri Ganapati as the auditor. Evaluate legal validity. बेटा ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा भी आंसर कर सकता है. Power to appoint the first auditor is given to the board, not to any individual director. तो इसमें प्रोविजन नहीं, लॉजिक ज्यादा है. Special resolution to remove the auditor at a general meeting shall be passed within 60 days. तो ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, तो ये एमसीक्यू यहाँ पे आएगा. ठीक है, देख लेना. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, अब ये कुछ मजा आया. FLP लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द रियल एस्टेट एंड द एनर्जी. तो देखो एक बात बताओ बेटा, reading the question is a psychological process. Do you agree with that? Because every question, every line gives you some hint. Some hints are useful, some hints are not of any use. तो हमारा काम ये होना चाहिए, whenever we are reading the question, we have to separate the hints, and we have to see that gathering the hints, is there any topic where all the hints are satisfied? Collect the topic, write it, and that's all. Just done and dusted. खत्म करो बात को भाई. तो देखो फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं आया. Defaulted on its borrowings which amounted to thousands of crore. Defaulted. Still यहाँ तक कुछ हमको मिला नहीं. During the year ended 31st March 2023, a fraud was uncovered. Uncovered means revealed. या जो कवर था उसमें से कवर निकल गया, तो detected. During the 31st, yeah, in respect of the various transactions of the company, and it was observed by the central government that the auditor of the company were involved in such fraud. Please suggest what can be the course of actions in this section. So let me tell you बच्चा, दो चीजें यहाँ पे आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा 147 लगेगा. क्या लगेगा? Section 147 talks about the punishment. So if the auditor himself is the involved in that, क्या लिखा है यहाँ पे? He will not be eligible for the next 5 years. And 447, बेटा 447 में आपको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 10 years की हो सकती है. ठीक है. जनरली ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो क्योंकि हर चीज पेनल्टी हम नहीं पढ़ सकते. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन.
मिस्टर अनिल अ चार्टर्ड, opportunity of being heard. वो तो ऑलवेज रहेगी बेटा, वेदर इट इज इवन इफ एनी लॉ फॉरगेट्स टू टेल यू, opportunity of being heard is the part of the natural principle of natural justice. So whether law mentions or not, it is always, in fact, anything where it is mentioned that it will not be given, it is inconsistent to that rule, which is unconstitutional, and court has to amend it. ठीक है. So Mr. Anil, a chartered accountant, is a partner of a firm and has been appointed as an auditor of the Lakshman Limited in AGM. तो बड़ा AGM में अपॉइंट हुआ है, held in September 2022, in which he accepted the assignment. Subsequently in January 2023, so I think how much time after, maybe September, October, November, December and January, after 4 months maybe, he offered Bharat, another chartered accountant who is the manager finance of the Lakshman Limited, to join the firm of Anil as a partner. तो guys, can you continue? I think this question is from the qualification, right? So एक बात बताओ बच्चा, क्या लिखा है? उसने किसी और सीईओ को पार्टनर बनाया जो उसी कंपनी में वो उसकी CFO है वहां पर. So CFO is coming under के, क्या होगा भाई? He would be as soon, look, आप ऐसा मत लिखो he can't make it. आंसर क्या रहेगा? वो कर सकता है, but he will be disqualified. खत्म करो बात को. Mr. Ashish, a practicing chartered accountant, is holding securities. I think इसके ऊपर तो हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया है. Of XYZ Limited having the face value for rupees 900 only. Whether Mr. Ashish is qualified for appointment? But what if instead of it was written Mr. Ashish's wife then? तो भाई आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है. 1 लाख वाला है. ये कर दिया ना हमने, तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों वापस आ गया? All right. Mr. P is a practicing chartered accountant and Mr. Q is the relative of Mr. P. क्या बात है? Is holding securities of ABC Limited having the face value of 90,000. अच्छा बताओ रिलेटिव के लिए कितना लिमिट दिया है? 1 लाख. बट ये क्वेश्चन आई थिंक मोर देन 3 टाइम्स इज ऑलरेडी आस्क्ड इन सी एंट्री एग्जाम. ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे वाइफ या ऐसा रिलेटिव वाला पॉइंट, ठीक है. चलो बच्चा, व्हाट इलस्ट्रेशंस ओवर. Let's go to some of, I would say, exercise questions also. शुरू करें? बोलो. Okay. State the procedure of the following: appointment of the first direct auditor, and second क्या बच्चा? Removal of statutory. Removal में what are the three important conditions? Special notice under section 115, central government's approval, and third is what? Special resolution 140 पढ़ाया था. Okay, 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by the government of Rajasthan. बेटा 1/4 कितना आता है? 1/4 कितना आता है पागलो? 25 ना. अयो, in order to qualify any company as a government company, how much needs to get done by the government? At least 51, not more than half. Don't say more than half. At least 51%. If it is 50.90, you are not a government company. Exactly, 51 and more than 50. These two interpretations are different. है भाई, वो समझो आप. So Mr. Neeraj, a chartered accountant, was appointed as an auditor of the company in the AGM held on 30th April 2018 by an ordinary resolution. Mr. Sanjay, a shareholder of the company, objects to the manner of the appointment of Mr. Neeraj on the grounds of violation of the Companies Act. Decide is it valid or not. So first of all, it is not a government company. If it is not a government company, then board will recommend to the member, but he will be approved by the like shareholder will appoint him by way of passing ordinary resolution. तो nothing wrong is done provided he should be appointed for the consistent 5. तो ये valid हो जाएगा, कुछ गलत नहीं है उसमें. मुझे लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी तरीके से गए हैं. आई थिंक हम चाहे तो भाई इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. अरे हाँ. EF Limited appointed individual firm Naresh and Company Chartered Accountants as the auditor of the company at the AGM 30th September 2022. Mrs. Kamla, wife. बेटा वाइफ है मतलब समझ लो, ऑडिटर है, वाइफ है, रिलेटिव कहाँ पे आएगा ये?
कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी लोन वाला कुछ होना चाहिए। डिड यू सी? अगर आप दो देखो, टिल दिस आई डिडंट हैव एनी क्लू साइकोलॉजिकल, जैसे मिस कमला वाइफ सुना तो अच्छा रिलेटिव पूरे ऑडिटिंग चैप्टर में एक ही जगह पे आता है। निष्पक्ष, तूने भी इसको ज्वाइन किया था क्या रात को? सॉरी। ठीक है। मिसेस कमला वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश इन्वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख, बट ओके, but Naresh and company continues to function as a statutory auditor. Can he continue or not continue? Yes. But what if instead of that it was 1.5? नहीं गया, 60 days मिलता है। 60 days. ये देखो, ये फिसलन जो है ना बड़ा स्लिपरी एरिया, पर ध्यान रखना। तो मुझे लगता है ये क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन तो हालांकि इसी में से कुछ ना कुछ होगा एग्जाम में। एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर, बेटा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट कंपनी, बट बात ये है गाइस, आप समझो यहाँ पर ऑडिटर लिखा है, ये क्लासीफाई नहीं है कि फर्स्ट कैजुअल वैकेंसी और रेगुलर ऑडिटर। और आई रिकमेंड भाई तीनों दिन लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। अ पब्लिक कंपनी whose shareholders include XYZ bank, a nationwide bank holding 18%. So guys, if any bank is holding 18% of your share capital, doesn't make any difference. So guys, this is for the government company and this is for the non-government company. This question should be not for less than 6 marks, पूरा डिटेल में लिखना है। बट कौन सा ऑडिटर भाई, फर्स्ट वाला कैजुअल वैकेंसी वाला या फिर सब्सिक्वेंट है, वो मेरे को नहीं पता, तो डोंट टेक चांस, सब वॉमिट करके आ जाओ। देखो उन्होंने लिखा नहीं, तो आपकी पहली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन इज अनक्लियर अबाउट विच काइंड ऑफ ऑडिटर। आपको एक क्लैरिफिकेशन नोट में लिखना, whether it's about the subsequent auditor, first auditor or the casual vacancy, and therefore I am explaining the provision for all. Please consider, खत्म। ऐसे नोट बॉक्स में करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। Examining the following situations, Mr. Avi, a practicing chartered accountant, is holding securities. देखो बेटा, ये I think already we have done in the example, same question I guess. He is a CA and holding Abhiram's. Whether Mr. Avi is qualified? No रे यार, क्या है इसमें? Examine whether Mr. Prakash, a practicing chartered accountant, Mr. Akash, a relative, 70,000. Come on guys, why should I discuss more? Yeah, this can be the confusing things for those students who are not reading this word carefully. तो guys, ये जो है ना, I think it's a good question. This is there to make you confused. Mr. Ramesh is a practicing chartered accountant indebted to MNP Limited for rupees. Qualified, disqualified? But what if it was 4 lakhs then? Qualified. क्या बात है? Mrs. KVJ, spouse of Mr. Kumar, but spouse आ गई तो मतलब वही क्वालिफिकेशन वाली बात है। Is the storekeeper of PRC Limited, directors of PRC Limited want to appoint Mr. Kumar as an auditor? What? अरे रुको रे, spouse of Mr. Kumar, is the storekeeper, अरे भाई ध्यान रखो, storekeeper है। एक सेकंड रुको, तो मिसिस केवीजे, दैट मीन्स इसकी वाइफ वहां पे एम्प्लॉई है, बट किस पोजीशन पे है? स्टोर कीपर पे। हाँ, अगर आप केएमपी के एम्प्लॉयमेंट में होते तो डिस्क्वालीफाइड हो, यहाँ पे क्वालिफाइड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ A Limited requested its statutory auditor to accept the assignment of अच्छा, पहली बार एक बढ़िया क्वेश्चन है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सुटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़ा किस सेक्शन का ये क्वेश्चन है? 144। ऑडिटर कैन नॉट गिव सर्टेन सर्विसेज। तो बेटा ये देखो क्लियरली लिखा है, उसको मगअप करके जाना। डिजाइनिंग ऑफ FIS, इफ यू आर इन्वॉल्व इन दैट, यू आर नॉट, या आफ्टर, देखो एक और चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को, यू वर बट नाउ यू आर नॉट, देन यू आर क्वालिफाइड। You were the part in the past, but now it is already completed, fees is taken and everything is fine. Now you can continue. Both the things cannot go together. 144 services and your auditorship cannot go together parallel. So हार्डली कितना 10 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन खा गए हम लोग यार। ठीक है, चैप्टर एंडेड। कल हम शुरू करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करेंगे GCA, द जनरल क्लासेस एक्ट। सी यू।